Bismillahirrahmanirrahim. I am again here with another topic about the nervous system. The human nervous system comprises of two main parts. That is the CNS, central nervous system, and the PNS, that is the peripheral nervous system. Further, the CNS is divided into the two categories. One is brain and the other is spinal cord. While that is the diagram of this central nervous system, in which you can see the brain and the spinal cord only. And in the PNS or the peripheral nervous system comes the nerves which are linked with the brain are the cranial nerves, and the spinal nerves which are related with the spinal cord. That is the diagram of it. Okay. Next is that definitely the protection of CNS is very much important because these two regions, brain and the spinal cord, are very much soft. So the brain is protected by the cranium and the spinal cord is protected by the vertebrae. And the nerves, the cranial nerves and the spinal nerves, they always are in the form of pairs. पेयर इसलिए है कि आपका एक साइड जो एक पार्ट है पेयर का वो लेफ्ट साइड के लिए और एक राइट साइड के लिए होता है. So cranial nerves are basically related on the head region because brain is present over here. So they are ultimately linked with your facial expression, movement of tongue, and all these. While the spinal nerves, they are related with the peripheral regions as well, which are your toes and the fingers, arms, etc. Now coming towards our nervous system, the peripheral nervous system, that is made up of the neurons. And inside our body, there are three types of neurons: sensory, motor, and relay, or the interneurons. The three are shown to you people. Okay, now let's start with their comparison. Okay, how you will be identifying which one of these is the sensory neuron, which one is motor, and which one is the inter or the relay neuron. Before that, I must be telling you the difference, at different parts of the neuron. Neuron is comprising of a cell body. It is just like a simple animal cell that is having nucleus in it, ultimately mitochondria, ribosome, cytoplasm, everything will be inside it. And these branches are known as the dendrites. These are basically the receiving part, which are going to receive the signals from the uh, receptors. That is the axon part. Axon is supported by, or that is covered by, the myelin sheet, which is the fatty layer, and that is going to serve as a function of insulation. That is not allowing the nerve impulses to move out of the axon because myelin is protecting them to leave the axon. That is the axon terminal, which will be transmitting the nerve impulses to the next neuron, which will be located over here. Okay, these are the three type of neurons. The neuron, how you people can identify that the neuron in which the cell body is at a side is the sensory neuron, and their location is from the receptor towards the CNS. CNS means spinal cord, and the brain, both are over there. Relay neuron आपको that will be in between the sensory and the motor. इन दोनों में से किसी से भी मिलता जुलता हो सकता है, but that will be comparatively shorter in size, and they are only located in the within the CNS, और ये विद इन द CNS ही अपनी इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं. मोटर न्यूरॉन्स की आइडेंटिफिकेशन ये है बेटा जी कि दे आर हैविंग द सेल बॉडी एट द टॉप. डेंड्राइट इसके भी टॉप पे है, इसके भी टॉप पे है, इसके भी, बट दैट इज द न्यूक्लियस विच इज आइडेंटिफाइंग और मेकिंग द सेल बॉडी. तो सेल बॉडी इज एट द टॉप एंड दे आर टेकिंग द impulses from the CNS towards the effector. यहाँ पे effector आपको बताऊं, effector can be your muscles which are going to contract fine, and that can be the gland which is going to produce its secretions. Okay, here you people can see that is the inter or relay neuron, जो बेचारा सबसे छोटा होगा. ठीक है, that will be the, वो किसी भी शेप का हो सकता है,
that will be the interneuron. Cell body at a side, then that will be the sensory. Cell body at the top, then that will be the motor. आपको एग्जाम में सम टाइम इनको आइडेंटिफाई करना आ जाता है, और सम टाइम आपको आता है कि ड्रॉ द एरो ऑफ द पाथवे ऑफ मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स और डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। वो आपको तभी पता चल सकेगी जब आपको इनकी आइडेंटिफिकेशन होगी, बिकॉज नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन सेंसरी से रिले, रिले से मोटर की तरफ होती है। ठीक है जी, लाइक दिस। तो wherever the cell body is at a side, that will be the sensory. Sensory से direction of conduction of nerve impulse will be towards the relay. Relay will be definitely in between the two, and that is having the cell body at the top, so that is the motor. तो direction आपकी further effector organ की तरफ चली जाएगी। ओके, अब आपको तो मैंने ये बता दिया कि अपने न्यूरॉन को सेंसरी कैसे बना देना है जब जिसकी सेल बॉडी साइड पे है। बट इफ दैट इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू, वेन एवर यू पीपल आर नॉट गिवन द सेल बॉडी, आपको इस तरह का एक स्ट्रक्चर दे दिया जाए, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज हैविंग the gray matter inside and the white matter outside. Why that is called the gray matter? Gray matter is darker comparatively, and it becomes darker because of the presence of the cell bodies of the neurons, relay neuron and the motor neuron inside it. ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द ग्रे मैटर। और ब्रेन में टोटल इसका अपोजिट होगा, ग्रे मैटर बाहर और व्हाइट मैटर इनसाइड होगा। एंड अगर आपको बेटा यू पीपल आर नॉट प्रोवाइडेड विद द न्यूरॉन्स ड्रॉन ओवर योर पेपर, देन यू पीपल कैन आइडेंटिफाई द रीजन, सेंसरी रीजन विद बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ दिस स्वेलिंग। जहां पर आप ये स्वेलिंग देखेंगे, इस साइड पे स्वेलिंग नहीं है, दिस स्वेलिंग विल बी शोइंग के दे सेल बॉडी इज ओवर देयर। Remember one thing, in this diagram you can only see the one neuron, but in this region definitely hundreds of neurons can be passing through. So whenever the 100 neurons will be passing, all having their cell body at this region, so that area will get swell. आपको swollen region नजर आएगा, जो basically that is called the dorsal root ganglion. So dorsal root ganglion की swelling is because of the cell body of the sensory neurons. And gray matter is gray because of the large number of cell bodies present in it from the relay and the motor neurons. Okay, आपको पेपर में एरोज ड्रॉ करने आएंगे, डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, वो आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिएगा। रिमेंबर वन मोर पॉइंट, दैट यू पीपल आर नॉट सपोज टू ड्रॉ टू मेनी एरोज, जिसकी वजह से आपके वो कोई खिचड़ी सी पक जाए, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, हार्डली 3 to 4 एरोज विल बी सफिशिएंट। ओके, नाउ कमिंग टू वर्ड्स, आई वाज टॉकिंग अबाउट सच टाइप ऑफ डायग्राम। अब अगर इसमें आपको न्यूरॉन्स ड्रॉ करने हैं, देन आप कैसे करेंगे मैं आपको भी बता देती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ से लेके जानी है एक पाथवे, और इस तरह से आपने इसको करते जाना है, यहाँ तक ले आना है। दैट विल बी द सेल बॉडी ऑफ योर न्यूरॉन, और यहाँ पे आपने इसके डेंड्राइट्स को ऐसे शो कर देना है। आफ्टरवर्ड यहाँ पर आपने एक और बनाना है, दैट विल बी द रिले होगा, और इसकी आपने ये डेंड्राइट्स इस तरह से शो कर देने हैं। दैट इज लाइक दिस, एंड दैट इज एंडिंग इन दिस वे, एक्सन प्लेट। और ये आपके पास जो होगा लॉन्ग है, दैट इज द मोटर। ठीक है, आपने इस तरह से इसको ड्रॉ बड़ी एहतियात से करना है, पेंसिल से अब जब आप ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा इजीली। दीज आर द डेंड्राइट्स। ठीक है, okay, now you will be asking that that is having the cell body over here and this is again the cell body at the top, beta this is comparatively shorter in size, remember this point. Okay, so आपके पास इस तरह से जो डेंड्राइट्स और आपने शो कर देना एक्सन। नाउ कमिंग टू वर्ड द डायरेक्शन ऑफ द एरो, वो डायरेक्शन आप इस तरह से बनाएंगे, देन फ्रॉम in this way and then from like this. Okay, I hope the point is clear to you people. Let me erase this all. Meanwhile, if you people are having any question, you can write it over there in the comment section. I will be definitely looking at that and will be try to reply you soon. Okay. So abhi tak I told you people that there are 3 types of neurons: sensory, relay, motor neurons. Relay को हम interneuron भी कह सकते हैं. Sensory are directly linked with the receptors which are receiving the impulses from the stimulus
or signal from the stimulus. So ultimately, whenever the stimulus is there, stimulus is basically the change in environment. The signal are sent through the receptor towards the sensory neuron, and afterwards sensory neuron is sending the signal towards the relay neuron, and relay will be sending signal to the motor neuron. That is the region, that is the CNS spinal cord. So here only the relay neurons are present. Okay, next slide is, that is this pathway. You can see the swollen region, dorsal root ganglion can be seen clearly. Okay, now remember one more important point that is new in the syllabus about the synapse. Synapse is a tiny gap between every two neuron. जहां पर भी दो कोई से भी न्यूरॉन है, चाहे between sensory और relay है, relay और motor है, whatever that is, wherever the two neurons are interacting, there will be a tiny gap between them, and that gap is known as the synapse. Remember one important point, that the axon end, at the axon end there are some vesicles which are having the neurotransmitter or the chemicals in them. They are released in this gap in the synapse, and they will be binding at the dendrite start of the other neuron on their particular receptor. ठीक है, what is the direction of the release of neurotransmitter from the axon end of the sending neuron or the first neuron and the dendrite start of the second or receiving neuron? There will be the neurotransmitter released over there. न्यूरोट्रांसमीटर आपकी जो एक कॉमन सा नेम है, हार्मोन भी है हमारी बॉडी में, दैट इज द एड्रीनालिन. याद रख लें, दैट इज वेरी मच गुड फॉर यू पीपल. नाउ कमिंग टू वर्ड्स, the 5 points which are mentioned over here, they are very much important. I have taken it from your syllabus. You have to write it as it is. आपको ये point याद करने पड़ेंगे. Impulses, जो first neuron, they will be coming at the end of the first neuron, which is the axon terminal. Neurotransmitter will be released, and that will be diffusing. Diffuse होगा बेटा, that is very much important keyword, and that will be binding at the receptor site over here. And the synapse is making sure the direction of nerve impulse is unidirectional, एक direction में flow होगा nerve impulse का. Okay, so that is the nerve pathway. Stimulus, any change in environment that is detected by the receptor. From receptor, the sensory neuron will be sending the signal towards the interneuron, which are always present in the CNS. Then from the interneuron, the signal are sent to motor, which are going to take it towards the effector. Effector can be muscle or a gland, and from there, response will be produced. There are some actions which are not requiring stimulus. They are voluntary actions. They are developing inside our brain as well. Like if I want to write, writing के लिए मुझे कोई stimulus नहीं require. So what will happen? The brain will be generating the mechanism that there are in the brain. Brain is the part of CNS. तो वहां पे relay neuron क्या करेंगे? They will be sending signal to the other relay in the spinal cord, and from the relay neurons of the spinal cord, the signal will be sent to the motor neuron, and that motor neuron will be sending the response. For response, they will be sending the signal towards the effector, and effector will be my muscles here in case of I want to write. Okay, so no sensory neuron are involved in case of voluntary actions. Now let's have a comparison of voluntary and involuntary actions. Voluntary actions are under your control. They are happening with your will, while involuntary are without your will, without your conscious responses. Okay. Involuntary actions are divided into two categories, regular and reflex actions. रेगुलर ऑलमोस्ट आपकी बॉडी में हो रहे होते हैं, आपको इनका अंदाजा भी नहीं होता. हार्ट बीट है, ब्रीदिंग है, पेरिस्टाल्सिस, ये सब कुछ आपकी बॉडी में चल रहा है. दे आर द रेगुलर इफेक्ट्स. you are not going to control these, while the reflex actions are spontaneous, instant, immediate action which are protective in nature. आपकी बॉडी को डिफरेंट किसी कंडीशन से प्रिवेंट करेंगे. दे आर द रिफ्लेक्स एक्शंस. ओके, सो अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि ये भी तो हमारी हार्ट बीट और ब्रीदिंग भी तो हमारी विल के बगैर हो रही है. व्हाई दैट इज नॉट द रिफ्लेक्स एक्शन? दैट इज द रेगुलर एक्शन. दैट इज योर बॉडीज mechanism which is making it in its balance. जबकि reflex action are keeping you protected from
any kind of any kind of stimulus. ठीक है, so instant एकदम से जो reaction produce होगा that will be reflex, other rest are regular. Okay, here is the difference between the involuntary action and the reflex action. All the involuntary action are not reflex action, but all reflex actions are the involuntary actions. And involuntary actions which are happening without your will, without your liking, they are just like heartbeat, breathing, and balancing of your body. And reflex action are protective. Remember, they are quick, immediate, spontaneous, instant, and they are happening in response to the stimulus. ठीक है, इसके लिए आपको ये जो हार्ट बीट ब्रीदिंग है, इसके लिए कोई स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं होता है, दे आर हैपनिंग ऑल द टाइम. सो आपके पास withdrawal reflex, knee jerk reflex और other reflex actions. यूजुअली इनवॉलंटरी एक्शन में आपके पास आपका हाइंड ब्रेन और आपके पास जो आपका मेड्यूला या आपका सेरिबेलम होता है वो इन्वॉल्व होता है, और आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है. वाइल इन द रिफ्लेक्स एक्शन आपके पास न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं विच आर टेकिंग द सिग्नल टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ब्रेन. Here you can people see the difference between reflex action and voluntary action. ठीक है, आप इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो. ब्रेन इन्वॉल्व रिफ्लेक्स एक्शन में नहीं होता, वॉलंटरी में होता है. रिसेप्टर आपके वॉलंटरी में इन्वॉल्व नहीं है बिकॉज आपके पास स्टिमुलस ही नहीं है. ठीक है, और रिफ्लेक्स एक्शन में आप अल्टीमेटली आपके पास जो स्टिमुलस भी है तो रिसेप्टर्स भी हैं. और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है हमेशा इन्वॉल्व होता है, जबकि वॉलंटरी एक्शन आप सीखते हैं थ्रू योर लाइफ एक्सपीरियंसेस. अंडर कॉन्शियस कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, वाइल वॉलंटरी आर. स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है क्विक होता है बिकॉज दैट इज लाइफ सेविंग, प्रोटेक्टिव होते हैं, वाइल वॉलंटरी कैन बी स्लो. रिस्पॉन्स टू सेम स्टिमुलस, अगर एक जैसे मैंने स्नेक देखा तो दूसरी बार स्नेक देखूंगी तो वही रिस्पॉन्स आपका रिफ्लेक्स एक्शन में प्रोड्यूस होगा, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. वाइल वॉलंटरी एक्शन विद योर एक्सपीरियंस आप उसको रिफाइन करते जाते हो, स्मूथनेस आती जाती है, तो दे कैन वेरी. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं हम. ओके, व्हाट इज द रोल ऑफ सॉरी, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है जी, what is the role of motor neurons in reflex action. ठीक है, they carry nerve impulses from the central nervous system to effector, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन. connecting a receptor to CNS, रिसेप्टर को CNS से कौन कनेक्ट कर रहा है, आपके सेंसरी. फॉर्मिंग अ साइनेप्स विद इन सेंसरी न्यूरॉन, ये हमारे पास रिले होंगे. ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम स्टिमुलस टू नर्व इम्पल्स, ये बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका ए ऑप्शन इज राइट. मोटर न्यूरॉन कहाँ से कहाँ नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, मसल टू स्पाइनल कॉर्ड, मसल से स्पाइनल कॉर्ड में नहीं, आपके पास ये सेंसरी है. रिसेप्टर टू मसल, वो भी सेंसरी, आपके पास सेंसरी एंड रिले दोनों आ जाएंगे इसमें. रिसेप्टर टू स्पाइनल कॉर्ड, ये भी सेंसरी. स्पाइनल कॉर्ड टू मसल, दैट इज द मोटर, यस दैट इज मोटर, डी ऑप्शन इज राइट. नेक्स्ट इज they are asking about the reflex pathway associated with the nerve pathway associated with reflex action, and they are asking if the X is damaged. तो बेटा अगर X डैमेज हो जाएगा, अल्टीमेटली हम उसे किसी भी चीज़ को कॉन्शियसली, जो ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं हम उसे परसीव नहीं कर पाएंगे, तो हम उस चीज़ को कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. ठीक है, आपके पास पेन भी आपको फील होगा, यहाँ से पाते आपका मोटर, आपका बाजू हट भी जाएगा, मूव भी करेंगे, बट आप उसे कॉन्शियसली कंट्रोल नहीं कर सकेंगे. आपका रिफ्लेक्स कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कॉन्शियसली. नेक्स्ट, व्हाट विच ऑफ दीज इज अ रिफ्लेक्स एक्शन. ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज होना, ये तो आपका नॉर्मल होम्योस्टेसिस है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्स. लिफ्टिंग अ बुक, दैट इज वॉलंटरी. प्रिवेंटिंग इंसेक्ट फ्रॉम फ्लाइंग इनटू योर आई, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, यस ऑप्शन सी. डी भी चेक कर लेते हैं. यूजिंग योर ब्रेन, आप ब्रेन यूज कर रहे हैं, वॉलंटरी एक्शन है, सॉरी दिस इज नॉट, ओनली द सी इज राइट. नाउ कमिंग टू वर्ड द विच रो करेक्टली डिस्क्राइब्स. ठीक है जी, इसको जरा देख लेते हैं. रिसेप्टर टू CNS में कौन लेकर आते हैं, आपके पास लाते हैं जी हमारे पास सेंसरी. बिटवीन न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, रिले होते हैं, तो ऑप्शन डी ठीक लग रही है बिकॉज इसमें दो ऑप्शन आपकी यहाँ पे ठीक हो चुकी हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर आपके मोटर ही आते हैं. ठीक है, तो डी ऑप्शन इज
Right. D option is right. Okay. Now here I just want to tell you people that हमारी बॉडी में एक थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है विच इज द हाइपोथैलेमस. अक्सर इसके क्वेश्चन आ जाते हैं. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपके होम्योस्टेसिस के चैप्टर के अंदर भी ये हाइपोथैलेमस का रोल है. तो यू हैव टू रिमेंबर कि हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड विद योर बॉडी temperature regulation. So that is important. Okay, that's all for today. Thank you very much. I hope you would have liked my video. Please do comment and tell me your problems where you are finding. If particular topic is required for explanation, do let me know. I will be definitely making a video on it. Thank you very much. Please subscribe my channel. Thank you very much. Allah Hafiz.